So, Dr. Nitya must have oriented you to what is mediastinum. Space between the two lungs is mediastinum. ओके, जो हम लोग हनुमान का एक फोटो देखते हैं, छाती फाड़ता है और बीच में राम लक्ष्मण सीता. वेयर आर राम लक्ष्मण सीता? Mediastinum. In his mediastinum. A heart is there in the middle mediastinum. Now this is the sternum. This is manubrium. This is sternum, and this is T1 to T12. T1. Don't talk. This is T4 and this is T12. The manubriosternal angle, which is also called as angle of Louis. Okay. This lies at the lower border of T4. Angle of Louis lies at the lower border of T4, and here is the diaphragm going like this. हा sagittal section आहे. This is the sagittal section. गायत्री, तुझं नाव काय? गायत्री. एप्रिल कुठं? sagittal section. हे anterior है. This is anterior, this is posterior, this is superior, this is inferior. Now here is the pericardium. So this is superior mediastinum, this is inferior mediastinum. Oh, inferior mediastinum. So this is superior mediastinum, this is inferior mediastinum. Inferior mediastinum is divided into anterior, middle and posterior mediastinum. Anterior, middle and posterior mediastinum. Okay. Then कुछ मिसिंग है क्या लोग आज? नमीशा किधर? तमन्ना आणि तिच्याबरोबरची ती दुसरी पोरगी काय नाव तिचं? समृद्धी. कुठे गेली? दुसरा अभिजित कुठे? हाँ? But so here is heart, middle mediastinum का content. Middle mediastinum content, one is heart. Then ascending aorta, वो भी middle mediastinum का content है. Ascending aorta. Okay. This ascending aorta becomes arch of aorta at the level of T4. It becomes arch of aorta at the level of T4 and becomes descending thoracic aorta again at the level of T4. That means arch of aorta ends at T4. Sorry, ascending aorta ends at T4. Arch of aorta starts at T4. Arch of aorta ends at T4. Descending thoracic aorta starts at T4. There is pulmonary trunk also in the middle mediastinum. Pulmonary trunk. But that pulmonary trunk divides into two pulmonary arteries, but they are there in the middle mediastinum only. Coming
इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लिया, मतलब इतना ऊपर नहीं जाता है वो, जस्ट दिखाने के लिए. कमिंग फ्रॉम द नेक आर टू थिंग्स. One is trachea and second is esophagus. So this is esophagus and this is trachea. Trachea divides at the level of T4. Some say T6. So when we breathe, it is T6. In a dead person, T4. Even if that bifurcation of trachea may be there in the inferior mediastinum, it is considered as a part of middle mediastinum. Considered as a part of middle mediastinum. Okay? Part of, कि तुझा एप्रन घालना है. गॉड्स तो इतना कॉन्फिडेंट रहने का रे, खुद देख रहा है वो कि डाला कि नहीं डाला. इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे होना चाहिए. ट्रैकिया इज पार्ट ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम. तो अभी सुपीरियर मीडियास्टिनम के 3 कंटेंट्स आपको मालूम है. 1 2 ट्रैकिया, 3 इसोफेगस, 4 नेक से नीचे आने वाला एक ग्लैंड थाइमस. थाइमस कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम. देन यहां से स्टर्नम से निकलने वाले मसल, स्टर्नो हायोइड, स्टर्नो थायरॉइड, these are the muscles. स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथोरैक्स. ऑर्गन्स में थाइमस, ट्रैकिया, इसोफेगस. देन आर्च ऑफ एओर्टा. आर्च ऑफ एओर्टा के ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस. राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन. ओके, सो दिस. So contents of middle mediastinum: heart, ascending aorta, pulmonary trunk, pulmonary artery, ascending aorta and its branches. आर्च ऑफ एओर्टा के 3 ब्रांचेस हैं. देखो आर्च ऑफ एओर्टा ऐसा है बॉडी में, उसके 3 ब्रांचेस है. एक है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक राइट साइड पे होता है. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक विच डिवाइड्स इनटू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन. तो ये आर्च ऑफ एओर्टा के ब्रांचेस हैं. असेंडिंग एओर्टा के ब्रांचेस क्या है? असेंडिंग एओर्टा के वो 2 ब्रांचेस है जिसके ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट का धंधा चलता है. राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. असेंडिंग एओर्टा. व्हाट आर द 2 ब्रांचेस? कॉमन कैरोटिड नहीं बोला, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. right coronary artery and left coronary artery. Okay? ascending, ये डिटेल्स में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि कैसे कहाँ से ओरिजिन लेते हैं, हाउ देयर आर साइनसेस इन द असेंडिंग एओर्टा, एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर. तो डिटेल्स आपको बाद में बताई जाएगी. असेंडिंग एओर्टा के 2 ब्रांचेस. डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है ना हमारा. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. अच्छा, मिडल मीडियास्टिनम, वन मोर कंटेंट इज बाइफर्गेशन ऑफ ट्रकिया. बाइफर्गेशन
of trachea, bifurcation of trachea. वो ट्रकिया ऐसा चिपका हुआ रहता है. फिर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को भूलो मत. पेरिकार्डियम and its contents, basically most of its contents, which includes ascending aorta, which includes pulmonary trunk, pericardium. So these are contents of middle mediastinum. Now contents of posterior mediastinum. Trachea? No. Why no? Because trachea is the posterior most structure in middle mediastinum. And anterior most structure in the posterior mediastinum is esophagus. What is the anterior most structure? Esophagus. The anterior most structure in the posterior mediastinum is esophagus. Then there is descending thoracic aorta. Descending thoracic aorta and its branches. Descending thoracic aorta and its branches. कोई डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का ब्रांच आपको याद है? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. जब हमने पढ़ा था तभी हमने बोला था कि अपर दो स्पेसेस में इट कम्स फ्रॉम सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी which is branch of costocervical trunk. फर्स्ट लेक्चर में किधर देखो, which is branch of subclavian. But space number 3 to space number 11, the posterior intercostal arteries. So from space 3 to space 11, the posterior intercostal arteries are given by descending thoracic aorta. The posterior intercostal arteries. What is the name of the 12th branch? Subcostal artery. So that will be also one of the branch, subcostal artery. Okay. Then there will be a branch called as superior phrenic artery. Superior phrenic artery. Superior phrenic artery supplies the diaphragm from above. Superior phrenic artery. And बीच में there are three branches. Pericardial branches, esophageal branches, okay, which supply the esophagus. Pericardial, esophageal, ऐसे उनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है. Pericardial branches, esophageal branches, okay. So these are the branches of descending thoracic aorta. Posterior intercostal artery in space number 3 to 11. Then subcostal artery, superior phrenic artery, पेरिकार्डियल ब्रांचेस. ये तीन जो है ना ऐसे ही है. पेरिकार्डियल ब्रांचेस, इसोफेजियल ब्रांचेस, मीडियास्टिनल ब्रांचेस, ऐसे ही उनके नाम. मीडियास्टिनल ब्रांचेस, ओके, नॉन स्पेसिफिक. तो ये तीन अगर है तो स्पेसिफिक है, ये तीन नॉन स्पेसिफिक है. नॉन स्पेसिफिक मतलब मिडल 1/3 ऑफ इसोफेगस टू द पेरिकार्डियम. मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं मीडियास्टिनम, ओके. तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के ब्रांचेस बताए आपको मैंने. हाँ, नाउ वन मोर कंटेंट ऑफ, सॉरी, इसमें हो गया इसोफेगस, एक हो गया, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हो गया, और है अजाइगस वेन. अजाइगस वेन, ओके. Then there will be vagus nerve in the posterior mediastinum. Phrenic nerve will be in middle mediastinum. Phrenic nerve, vagus nerve.
Okay. In superior mediastinum, there will be one more content, which is SVC, superior vena cava. Superior vena cava. सुपीरियर वेना कवा. सुपीरियर वेना कवा के बारे में आपको केवल 3 ही लाइंस याद रखना है. देखो, बाय द जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन द ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज फॉर्म्ड. बरोबर. जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन एंड internal jugular. Junction of subclavian and internal jugular. What is formed? Brachiocephalic. This happens behind the sternoclavicular joint. तो ये राइट स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट के वहाँ पे होगा, ये लेफ्ट स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट के वहाँ पे होगा. इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन. सो दिस इज लेफ्ट. और यहाँ से एक ब्रेकियोसेफेलिक फॉर्म होता है और दोनों यूनाइट होके एसवीसी फॉर्म होते हैं. ओके. एसवीसी इज फॉर्म्ड. एसवीसी, तो ये कौन सा है? ये स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट के यहाँ पे हो गए. बरोबर. ये जंक्शन कहाँ पे है? स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट. एसवीसी इज फॉर्म्ड बिहाइंड द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज. It pierces the pericardium. This is pericardium. Behind the second costal cartilage and enters the right atrium behind the third costal cartilage. अच्छा है ना, ऐसे ऑर्गन्स और होते तो कितना एनाटॉमी इजी हो जाता. एसवीसी इज फॉर्म सुपीरियर वेना केवा. नहीं तो बाद में पूछोगे वो सर एसवीसी आप बोल रहे. एसवीसी सुपीरियर वेना केवा which is formed where it is formed behind the yes CR. बरोबर. कसं होतं अलिबाग तुमचं? हां, फोटो बिटो नाही दिसले तुमच्या स्टेटसला. What is SVC? Very good. Where it is formed? It is formed. तसंच उभं राहा. जोपर्यंत उत्तर सांगत नाही तोपर्यंत बोल. नाही. Sternoclavicular joint, behind all the sternoclavicular joint, the brachiocephalic veins are formed. They unite behind the first costal cartilage, right side. Right side. ओम उभा. खोकलास म्हणून म्हटलं. So what are the important landmarks for SVC? It is formed behind the first costal cartilage. It pierces the pericardium behind the second costal cartilage. And 3, it enters the right atrium behind the third costal cartilage. तो मैंने आपको आज SVC सिखाया है, असेंडिंग एओर्टा सिखाया है, मैंने आपको डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा सिखाया है और आर्च ऑफ एओर्टा भी सिखाया. लेकिन एग्जाम में ब्रांचेस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछते हैं और वो है रिलेशंस. उसके लिए 2 डायग्राम्स याद रखने हैं आपको. सीआर या पुढे तुम्ही या लवकर या पटपट यायचा. गुड बॉय. द बोर्ड पुसा. बस कर. 2 sections, one passing at the level of T5. उसमें आपको असेंडिंग एओर्टा दिखेगा और डिसेंडिंग भी दिखेगा. एंड व्हाट एट द लेवल ऑफ T4, लिटिल अबाउट T4, उसमें आपको आर्च ऑफ एओर्टा दिखेगा. बरोबर ना? असेंडिंग एओर्टा. हाँ, थँक यू राजा. नाव काय तुझं? अजय.
तो राइट नाउ वी आर ड्राइंग द सेक्शन एट द लेवल ऑफ T5. ये स्टर्नम है, स्टर्नम है, ओके, और यहाँ पे वर्टिब्रा है. ये वर्टिब्रा है T5, T5, ओके. देन दिस इज द रिब. कौन सी रिब है? रिब नंबर, हाँ, रिब नंबर 5, ओके. फिर यहाँ पे है प्लूरा. प्लूरा के अंदर है लंग. कौन सी साइड की लंग है ये? ये लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, ओके. ये है प्लूरा, ये है राइट लंग. क्लियर? यहाँ पे ये है ट्रकिया. ये ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकस जा रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस जा रहा है. यहाँ तक किसी को कोई शक या सवाल? अजय? मैं सबका नोटबुक देखने वाला हूँ आपके. अजय भास्करे चालू करा, भास्कर आता तुझं इन पास ड्रॉ कर. मी येणारे बघायला मागे. somehow मेरे पास ये ब्लू कलर शायद सराटे सर तुटवड आहे आपल्याकडे. ब्लू कलर, ब्लूच्या ऐवजी आपण ग्रीन करू. चला ब्लू. ये वेन है SVC, SVC, ओके. ये है हमारी पल्मोनरी ट्रंक, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ओके. उनको भी मैंने ब्लू लिखा है. ये ब्लू है, ब्लू. AA म्हणजे काय? हाँ, ऐसे नहीं होता, आज का भी होता नहीं. मतलब अपन इसको AS, असेंडिंग एओर्टा को. हाँ, बरोबर है पूनम? असेंडिंग एओर्टा. वो असेंडिंग एओर्टा यहाँ से निकलता है, लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से यहाँ पे जाता है. तो ये क्या है? DTA. क्या है DTA? कोपऱ्यातला मुलगा सेकंड. हाँ, तू उभा. हे काय आहे? DTA तुझ्या मागचा रे. हां, हे काय? DTA म्हणजे काय? बाजू. उभा ना, मस्त स्माइल देतो. बाजू. हां, बाजू. हां, डिसेंडिंग थोरॅसिक एओर्टा. बसा बसा बसा, तुम्ही पण बसा. डिसेंडिंग थोरॅसिक एओर्टा, ओके. तर तो कसा? तर बघा इकडे बघा. हो, मस्त. तुम्ही सारखं 5-5 मिनिटाला असं असं करताय. माझे पण येणार आहेत केस आता 1 महिन्याने.
असेंडिंग एओर्टा ऐसे आर्च होके लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से ऐसे जाता है. समझे आपको रिलेशन? हाँ, असा इथून असा इथून डिसेंडिंग होतो. ओके, माय अपोलॉजीज. डिसेंडिंग को मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूँ. डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. रीजन इज यहाँ पे एक ऑर्गन मैं भूल गया. कौन सा भूल गया? बोलो बोलो बोलो, कौन सा भूल गया? जो एओर्टा के आगे रहता है. इसोफेगस इज द एंटीरियर मोस्ट ऑर्गन इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. पहले इसोफेगस, साइड में एओर्टा, साइड में और पीछे एओर्टा. पीछे तीन चीज होते हैं. एक DTA, एक थोरेसिक डक्ट, अजाइगस वे. सो ये क्या है? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है ना. T5 क्या क्या है उसके कंटेंट्स? हाँ, थोरेसिक डक्ट. तो उसमें थोरेसिक डक्ट ऐड करो, हमने जो सीखा. एंड अजाइगस वे. ओके. एंटीरियर मीडियास्टिनम में कुछ नहीं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स रहते हैं, बाकी कुछ नहीं. ओके. नाउ नर्व्स. यहाँ पे और यहाँ पे. पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में कौन से नर्व्स दिखाए थे हमने? खुरपा. जोर से बोलो. वेगस. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट वेगस एंड लेफ्ट वेगस. राइट वेगस एंड लेफ्ट वेगस. गणेश. गणेश कुठे? गणेश गणेश बरोबर. मिडल मीडियास्टिनम मध्ये कोणत्या नर्व्स होत्या? दोन. फ्रेनिक. फ्रेनिक. तो राइट फ्रेनिक इधर होता है. राइट फ्रेनिक, राइट फ्रेनिक. और यहाँ पे होता है लेफ्ट फ्रेनिक. यहाँ पे होता है लेफ्ट फ्रेनिक. This is section at the level of T5. ये अगर आपने निकाला तो इसमें आप SVC के रिलेशंस लिख सकते हो. To the right is right lung and pleura phrenic. To the left is ascending aorta. Okay, anteriorly sternum, posteriorly pulmonary artery. Ascending aorta to the right is SVC. Okay. Descending thoracic aorta relations. To the right is the thoracic duct, azygous vein. To the left is left lung and pleura. Anteriorly is esophagus. ओके. सारे रिलेशंस इसमें कवर हो जाते हैं. कितने ऑर्गन्स के? SVC, ascending aorta, descending thoracic aorta, thoracic duct, azygous vein, esophagus, trachea. इन सारे ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आए तो एक डायग्राम निकाल के आपका सारा काम हो सकता है. ओके. मंजूर है? ठीक है. So we'll rub this now. इसको इन्वाइट करो मैं उसके पहला बेंच. सिंसियर थांब जरा सा, मला फक्त एक फोटो काढू दे. थांब. ये काय है? ये जो डायग्राम है ना, तो थांब थांब ना.
इतने सारे बुक्स में मैंने देखा, ऐसा वो चौरसिया के सेकंड एडिशन में से मैंने निकाला। फिर दूसरे एडिशन आए, उसमें उन्होंने अभी ये अगर हमने राइट यहाँ पे निकाला है और लेफ्ट वहाँ पे निकाला है, तो हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं? हाँ, ऊपर से देख रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा डायग्राम निकाला कि जिसमें हम नीचे से देख रहे हैं। फिर आपके बुक में जो डायग्राम निकाला है ना, उसमें उन्होंने वर्टिब्रा पीछे और रिब ऐसे, स्टर्नम इधर, उसके बाद जो लेफ्ट वेगस जहाँ पे है, वहाँ पे उन्होंने लिखा लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नाउ। तो ऐसा मैं एकदम परेशान हो गया। तो आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल डायग्राम्स, फाइनली मैंने ये डायग्राम, आपके पास लेटेस्ट वाला है? कौन सा है, निकालो इसको। सब लोग देखो वो डायग्राम आपके बुक में जो अभी हमने निकाला, पाठीमागच्या बाजूला शेवटी वो सब सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स वगैरह में है। लंग हार्ट खत्म होने के बाद ये सेक्शन है। मिला आपको? देखो इसमें भी उल्टा निकाला है उन्होंने, नीचे से देख रहे, नीचे से देख रहे और ना क्लिष्ट कर दिया है ना उन्होंने, देख के ही स्टूडेंट्स रिपल्स हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसके लिए मैंने वो सिंप्लीफाई करके, अरे जिस हाँ बट राइट इस साइड पे है ना उनका, राइट इस साइड पे, लेफ्ट इस साइड पे, समझ रहे हो आप? सॉरी हम तू रब किया, मैं तेरे को बोलताने वाला था कि खाली बीच का कंटेंट रब कर, बट मैं भूल गया। अभी मैं T4 के लेवल का सेक्शन निकाल रहा हूँ। T4 सराटे सर बरोबर आहे ना, ते खालून बघितल्यासारखं केलंय ना त्यांनी, सिटी खालून दिसत। ओके, सो नाउ इस साइड पे एक लंग है, ट्रकिया मैं इसमें हम ऐसे ये नहीं दिखाएंगे बिकॉज इसोफेगस। मैं अभी एक तो मेरे राइट लेफ्ट के लफड़े सब वांदे, कितने लोग हैं इधर? हम बीच में भी मैंने एक बार पूछा था राइट लेफ्ट के प्रॉब्लम वाले रिक्शा वाले को, लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में चलो। इतना करके मैंने कैसे कैसे लाइफ में अपने आप को समझाया कि बाबा अभी थोड़े ही साल बचे हैं रिटायरमेंट को, अभी संभल ले, छोड़ मत एनाटॉमी। उसमें चौरसिया ने ये सब कर रिकॉर्ड। तो इस डायग्राम में आपको आर्च ऑफ एओर्टा निकालना है, ऐसे आर्च ऑफ एओर्टा। राइट, प्रीवियस डायग्राम में हमने असेंडिंग इधर दिखाया था, जिधर असेंडिंग दिखाया था वहां से चालू करना है, और जहां पे हमने डिसेंडिंग दिखाया था वहां पे एंड करना है। ये T4 का और इसका डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। फिर थोरेसिक डक्ट है,
यहाँ पे थोरेसिक डक्ट है, अजाइगस वेन अभी नहीं रहेगा, वो T4 के लेवल पे एंड हो जाता है, बिकॉज हमारे पीजीज नहीं ला रहे चौक, तो वापस मैं ग्रीन से एसवीसी दिखा रहा हूँ, ग्रीन। ओके, यहाँ पे सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन दिखा है, कैसे सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और यहाँ पे फ्रेनिक है, लेफ्ट फ्रेनिक, लेफ्ट फ्रेनिक, और यहाँ पे है लेफ्ट वेगस, यहाँ पे राइट वेगस, और यहाँ पे है राइट रिकरेंट लैरेंजियल, राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। जिसके भी राइट लेफ्ट का बहुत अच्छा है वो मेरे डायग्राम प्लीज कोरिलेट करके करेक्ट करो। और राइट फ्रेनिक इधर है ना ओम, राइट फ्रेनिक, फिर यहाँ पे कार्डियक नर्व्स है, बरोबर ना रे? कार्डियक नर्व 1 2 3 4, तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली का कि लेफ्ट वेगस अगर आर्च ऑफ एओर्टा राइट से लेफ्ट ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ पे राइट से लेफ्ट ऐसे जा रहा है, तो मैं जानबूझ के हाथ ऐसे कर रहा हूँ, तो लेफ्ट वेगस उसके आगे रहती है, फिर वो थोड़ा पीछे चली जाती है, नेक्स्ट सेक्शन में वो पीछे है, इसके इधर ये पोजीशन पे आती है। सो इफ आर्च ऑफ एओर्टा इज लाइक दिस, द लेफ्ट वेगस passes like this, इस तरह पीछे जाती है, and it gives a branch called as left recurrent laryngeal nerve, left recurrent laryngeal nerve, जो एओर्टा के पीछे से चली जाती है। देखो यहाँ पे दिखे, मतलब वेगस ऐसी है, उसने लेफ्ट रिकरेंट दी, फिर वो यहाँ से ऐसे ऊपर चली गई। हे राईट वेगस बरोबर आहे का इकडे, का जराशी लांब आहे? हां, थोडीशी लांब आहे ना? हां, कुठे, किती लांब आहे? इथं बरोबर आहे ना? हां, इथंच आहे ना? ये थोरैसिक डक्ट, ओके। सो ये दो सेक्शंस, फिर एक T8 है, कोई T3 निकालता है, बट वो कभी पूछते नहीं एग्जाम में। T5 T4 आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं आर्च ऑफ एओर्टा के रिलेशंस के लिए, एंटीरियरली लेफ्ट वेगस, हाँ हाँ सॉरी मैं बोलते समय लेफ्ट बोल रहा था, आई एम सॉरी, लेफ्ट रिकरेंट, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल, लेफ्ट, बाकी ठीक है ना? चलो, सो विल स्टॉप हियर टुडे। कुछ लोग, मैंने एक सेशन लिया था इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें बहुत लोग नहीं थे, तुम लोग छुट्टी मार के चले गए, तो फोटो निकाला, डायग्राम निकालने को बोला तो मैं, तो फोटो निकाल रहा है। तो मैंने उसमें बोला था कि फीडबैक दो, एक ने भी नहीं दिया, किसी ने दिया कि हाथ ऊपर करो? नहीं ना? टाइम किधर मिलता है सर, इतना इंस्टाग्राम फेसबुक ये। मेरा ईमेल वापस लिख रहा हूँ,
DRYUVA, हा ए विसरायचा नाही, RAJ@gmail. हे लोक इथं गडबड करतात. युवराज सिंग इज YUVRAJ. तो माझ्यापेक्षा जास्त फेमस आहे अनफॉर्च्युनेटली. त्यामुळे म्हणून मी हा दुसरा ईमेल देतो, YJB@KEM.edu. मी अजून सुद्धा KEMच्या मेडिकल एज्युकेशनवरती फॅकल्टी म्हणून जातो तिथे ट्रेनिंगला, KEM. त्यामुळे माझा ईमेल चालू आहे. सब्जेक्टमध्ये लिहायचं फीडबॅक, सब्जेक्टमध्ये लिहायचं फीडबॅक 2024 बॅच. ओके, तुमचं नाव, बर्थ डेट, ॲड्रेस, मोबाईल नंबर, आधार नंबर. त्याला अटॅचमेंट म्हणून तुम्ही पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लावायचा असेल तर लावा, ते ऑप्शनल आहे, ऑप्शनल आहे. त्यात तुम्ही नुसतं असेल लिहाल ओम, आता मला लक्षात राहतं इथे अभिषेकच्या, गायत्री, अजून 10 वर्षांनी कसलं काय, तर मग ॲटलिस्ट फोटो बघून प्रयत्न करतो. आणि माझे सुद्धा स्टुडंट आता माझ्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान जास्तीत जास्त, मेरा फर्स्ट बैच, वो अभी सब 45 वगैरह, वो मेरे को मिलते हैं. ऐसा किसी का बाल नहीं, किसी का सब सफेद हो गए. तो मेरे को भी पहचाना, और बोलते सर पहचाना क्या, तो इसके लिए फिर वो फोटो से कुछ तो रिजेम्बलेंस मेरे को दिखना चाहिए. ओके, होतच ते आता वयोमानानुसार तुमचं पण होणार आहे, काळजी नका करू. सो हे प्लीज ईमेल पाठवा, जिसको भी ऐसे फीडबैक, ऐसे दिल से लिखना है, एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. एक भी नहीं आया अभी तक 150 में से. हार्ट सिखाने से पहले आना चाहिए. आई विल नॉट टीच यू बॉटम ऑफ हार्ट कैसा होता, अनलेस यू राइट. ओम, तू इकडे फोटो काढतो क्लासमध्ये, थांब जरा 1 मिनिट, मला काढायचं नव्हतं. चला ते पहिलं पुस. सो मेरे सारे बैचेस के अभी तक 1998 से अभी तक सारे बैचेस के मैंने फीडबैक संभाल के रखे. तो प्लीज़ आप भी ज़रा सा प्रयास कीजिए 4 शब्द लिखने के लिए. पुसून टाका, असंही कोणी काही पाठवत नाही. YJB@KEM.edu. फीडबैक नहीं आया तो नेक्स्ट बैच विल बी देयर ओनली.